Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So today in this video, I'm going to teach you Standard 4th Scholarship English chapter number 2, that is homophones. So let's get started. What are homophones? Homophones are the words that sound the same but are spelled differently and have different meanings. समझ कर ले लो पहले होमोफोन्स क्या होता है. ऐसे वर्ड्स जो आप जब बोलते हो तब सेम ही साउंड करते हैं बट उनकी स्पेलिंग्स और उनका मीनिंग जो है वो अलग होता है. आपको ईजिएस्ट एग्जांपल देती हूँ. एस डबल ई सी एंड SEAC. देखो ये भी सी ही है, ये भी सी ही है, बट इन दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं. सो आपको याद क्या रखना है, सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग इज इक्वल्स टू होमोफोन्स. दीज आर कॉल्ड एज होमोफोन्स. बहुत ईजी है, ठीक है. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द solved or sample questions. In your exercise, you are going to have three types of questions. First will be choose the word that sounds similar, then choose the correct pair of homophone and fill in the blanks with the correct word. अब देखो, choose the word that sounds similar में आपको एक word दिया होगा. They will give you a word and you have to find out another word that has the same sound. बोलने में वो भी same हो, ऐसा वाला word आपको ढूंढना है. So let's find out. ALOUD, allowed. Let's see which one is similar here. LOAD, load. No. ALLOWED, allowed. See, allowed, allowed. So they are same. So option number 2 is correct. Next, choose the correct pair of homophones. Let's read them. Rich, reach. No. Tail, tell. No. Cereal, cereal. Yes, both of them sound same. So these are the homophones. Next, fill in the blanks with the correct word. Nikki did not go to school last dash. अब हमें आंसर पता है लास्ट वीक, बट कौन सा वाला वीक करेक्ट है, तो हमें कौन सा चाहिए, हफ्ता. ओके, डेज ऑफ द वीक वाला वीक. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज WEEK, वीक. नेक्स्ट वन, questions for practice. Now see here, according to the first question we have to do choose the words that sound similar to the given words. हम जो क्वेश्चन का वर्ड है वो पढ़ने वाले हैं और उसी की तरह सेम किसका साउंड है वो हमें ढूंढना है. ओके, सो लेट्स रीड. BEAN, bean. BAN, ban. No. BONE, bone. No. BEEN, bean. Yes. So the correct option is option number 3. Next, ATE, 8. EIGHT, 8. Yes. Option number 1. STAIRS, stairs. START, start. No. STRESS, stress. No. STEERS, tears. No. STARES, stairs. Yes. देखो ये भी stairs है, ये भी stairs है. Next one. THREW, threw. TREW, trew. No. THROUGH, through. Yes, this is also through. This is also through. Fifth one, course. SCARCE, scars. Wrong. CHORUS, chorus. No, wrong. COARSE, course. Yes, this is also same. This is also same. So option number 3. MADE, made. MEAD, mead. No. MODE, mode. No. MAD, mad. No. MAID, made. Yes, it is correct. BURY, bury. BURLY, burly. No. BERRY, bury. Yes, this one is correct. Okay, but I'll tick mark the answers again so that it's easier for you to see the answers here. Okay, next, WIGHT, weight. WHITE, white. WHEAT, wheat. No. WAIT, weight. Yes, so option number 3 is correct. WORSE, worse. WEARS, wears. Wrong. VERSE, worse. Yes, it is correct. ये भी वर्स है, ये भी वर्स है. नेक्स्ट, CHEAP, cheap. अब आप बताओ मुझे which one is the correct option. Cheap, chaff, cheer, chap. Which is correct? This one. So your answers are bean, ate, stairs, through, course, made, worry, wait, worse and cheap. Let's go further. Question number 2. Choose the correct pair of homophones. Let's see which one is correct. सारे बोलकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा. देखो, waist, wart. No. Hair, here. No. Whale, well.
Yes, option number 3. Tane, taunt, no. Vain, vain, yes, option number 2. Next, steers, stare, no. Fire, freer, no. Collar, color, no. Rude, rude, yes, option number 4. Fourth one, insight, insight, correct, option number फर्स्ट. सी वेरी इजी. होमोफोन्स में आपको क्या करना है, दोनों वर्ड्स पढ़कर देखने हैं. जो सेम साउंड करता है दैट इज योर होमोफोन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with the correct words. Do you know the dash answer? कौन सा आंसर? You tell me. Right, RIGHT right, RITE right or WRIGHT right? Option number 2, RIGHT right. नेक्स्ट, शी डैश आउट ऑल द कैंडल्स ऑन द केक. मतलब हमें कहना है कि उसने कैंडल्स जो है वो बुझा दी. ब्लू द एयर, यू नो, ब्लू आउट. सो हमें ब्लू की स्पेलिंग ढूंढनी है. तो कौन सा वाला ब्लू करेक्ट है? टेल मी. BLUE, BELOW, BLEW या BILLOW? द करेक्ट वन इज BLEW, ब्लू. नेक्स्ट, कैन यू बी बैक इन एन डैश. हमें यहाँ कहना है कि तुम 1 घंटे में वापस आओगे क्या. तो 1 घंटा, विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर आर? This one, HOURR. I heard the dash about the princess and the pea. यहाँ पे we are telling that हमने एक स्टोरी सुनी है, एक टेल सुनी है. Which spelling of tale is correct? TAIL, TALL, TLE tail या TOLL tall? Correct option is TALE tail. Fifth one, the little girl ate dash sweets during the party. Little girl है, उसने 8 sweets खाए हैं. तो कौन सा वाला 8 की स्पेलिंग करेक्ट है? Tell me. ATE, EAT, AT या EIGHT? The correct one is EIGHT, 8. So your answers are right. Blue, R, tail and 8. Understood? Next one, the queen dashed lazily from her bed. The correct option is ROSE, rose. She went to mall to dash her friend, meet her friend. Which spelling of meet is correct? Tell me. MEET, meet. The king's dash was made of gold. The king's throne was made of gold. Which throne spelling is correct? ये देखो, ये फर्स्ट वन भी throne है, बट उसका मतलब क्या होता है? फेंकना. हमें कौन सा चाहिए? गद्दी, राजगद्दी वाला throne. So the correct spelling is THRONE, throne. Your wound will dash soon, heal soon. कौन सा वाला heal correct है? Tell me. HEAL, heal. It is not easy to dash weight, lose weight. कौन सा वाला lose correct है? Tell me. LOSE, लूज. देखो ये वाला भी लूज ही होता है, बट इसका मतलब क्या है पता है आपको? कपड़े लूज होते हैं, वो वाला लूज है ये. हमें कौन सा चाहिए? वेट लॉस किया है, लूज किया है, वो वाला. सो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर homophones. So that was it for today's video. If you have liked the lecture, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.